9 into 10 to the power minus 31 kgs. All the isotopes of a given element show the same chemical properties. Protons and electrons are collectively known as nucleons. Dalton's atomic theory regarded the atom as an ultimate particle of matter. Choose the correct answer from the options given below. How is it? Fine. Alia, Aaron, and Nabil. Now it's okay. So thoda issue hai, but it's fine. It's fine. The class. So उसी के साथ please try this question. I hope you don't need any theory for this question. Okay, Alia and Aaron have answered. Nabil, can you please also try? Stay with me. Okay. What about the first statement? The all atoms of all elements are composed of two fundamental particles. So this is not right. The fundamental particles are electron, proton, and neutron. My voice is again lagging. No, sir. Not lacking again. Maybe आपके यहाँ से electrons, protons, and neutrons. There are three fundamental particles. So the first statement is not right. It is incorrect. What about the second statement? This is correct. I mean, this is completely factual data that you have to. If you know it, you know it. If you don't know it, then you don't know. Okay. So let us suppose कि आप इसको नहीं जानते ना, इसको unknown मान के चलते हैं. Maybe you don't remember. You should though, by the way. All the isotopes of a given element show same chemical property. This is true. Why is this true? Because the chemical property of an element, it depends on the number of electron it is having, the number of proton it is having, and number of electron it is having. It does not depend on the number of nucleons. So neutrons, as we know, that they are neutral and they don't affect the chemical property. So all the isotopes, like means reactions of hydrogen and deuterium, they are completely same. Now, protons and electrons are collectively known as nucleon. This is incorrect because electron is not inside the nucleus, it is outside the nucleus. Dalton's atomic theory regarded atom as the ultimate particle of matter. This is true. So from our knowledge, we know that C and E is true. Okay, C and E is true. The others are not true. We don't know anything about D. So from there, we will start looking at the answer. Here they are saying D is correct, so this will be wrong. If they are saying E is correct, so this will be wrong.
Here they are saying B, C, and E is correct. This may be right. Let's look at the D option. A, B, and C only. No, A is not correct. So A is incorrect. So the only correct option that we are having. Please remember, we don't know anything about B, right? Only looking at C and E, we can say that B, C is B, C, and E is the correct. Okay, please copy this down. Okay, moving on. Try this. The relation between the number of permissible values for magnetic quantum number for a given value of azimuthal quantum. Take 2 more minutes. Okay, Nabil. Alia and Aaron, please answer. Okay, Alia, just waiting for Aaron now. So I don't know this one. Yes. N is known as the principal quantum number. L is known as the azimuthal quantum number. And we represent M, but here it is saying that NM, that is representing the number of magnetic quantum numbers. Now, please. M is what? Magnetic quantum numbers. Now, for N, they have the values available for N. It is what N can be equal to 1, 2, 3, and so on. The values of L, it depends on the value of principal quantum number. L, it is equal to 0 to N minus 1. And M, the values, or rather the number of values of M, it depends on what? It depends on the value of M. So the values of M that we have, it is from minus L to plus M. Now you can, at least if you know this much, then you can apply this. Let's suppose you have L is equal to 0. M will be equal to 0. L is equal to 1. M will be equal to minus 1, 0, plus 1. So here if you see there is only one value. Here if you see there are three values. L is equal to 2, then M will be equal to minus 2, minus 1, 0, plus 1, and plus 2. So here you can see there are 5 values. And there is a very unique relationship that you can see here. Whatever the value of L is, whatever the value of L is, for example, it is 1. So 1 and 1, it is coming 2 times. The value of L is 2. So it is 1, 2, 1, 2. It is coming again 2 times. So we can say that the number of values of M, it is equal to twice of the value of L plus 1 because there is one value 0.
Okay, now let us see if this is an answer. So the first one is saying L is equal to, so let us also write this according to the L. For L, what we will have to do, L will be equal to, 1 will go that side, so we'll have NM minus 1 and 2 divided by 2, like this. So this is equal to L. This is not right. Not right. Not right. This is correct. Enough. L is equal to NM, number of magnetic quantum numbers, minus 1 divided by 2. Will you please copy this down? So copy Okay, try this one. Incorrect set of quantum numbers. You can expect at least one question from the quantum numbers part. Okay. Nabil has answered. Nabil, can you tell me what is the problem? By the way, let me tell you all of these things. First of all, what is given? N is the principal quantum number. This is L, okay? That is the azimuthal quantum number. Then M1, it is not M1, rather it is ML, represents the magnetic quantum number. And MS, it represents the spin quantum number. Yes, Nabil, can you tell me what is the incorrect thing in the answer you gave? Similarly, Hiram, can you tell me what is the incorrect thing? We'll take one more minute. You guys need to tell me what is the incorrect part here. Why, Nabil? Look at the value of L. Here, guys. Here they are saying N is equal to 4, L is equal to 3. So when N is equal to 4, L will be equal to 0, 2, and minus 1. That means it will be 0, 1, 2, and 3. Okay, so it can be all of these three values. So it is 3. 3 is valid. And then M is minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Yeah, that's fine. Everything is correct here. Right? Let us see. N is equal to 5, L is equal to, yeah, obviously, the 0 to 5 means 2 aega. If I look at the magnetic quantum numbers, it is minus 2, minus 1, plus 1, plus 2. Now, the 0 is not here. 0 should be included, but 0 is not here. So this will be not correct. Let us look at the other one. N is equal to 4. So inside 4, 2 will also come, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. M will be equal to plus half or minus half. So this is also right.
n is equal to 5, n is equal to 3. Yeah, 5, 3 will come between 0 to 5. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. That's fine. M is equal to plus half is also correct. So the option which is correct is B option. Okay, so 0 was missing in the B option for the magnetic quantum number. That is why it is incorrect. Okay, try this. Oh, you need the options. Now, just give me a second, guys. I have not pasted the options. Just give me a second. तो ये options यहाँ पे take 2 more minutes. ये भी आसान है भाई, क्या हो गया? नबील एंड आलिया, प्लीज आंसर. ऐसे आंसर. When n is equal to 2, L is equal to 1. Now, what are the different values of L? L can be equal to 0, okay, can be equal to 1, 2, 3, 4, and so on. 0 stands for S, 1 for P, D, S, P, D, F, G. Okay, so these are the different suborbitals or subshells. So for 2, 1, that means the principal quantum number is 2, the azimuthal quantum number is 1, that means it is 2P. ठीक है, तो वैसे एक सेकंड रुक जाइए. 3 3 4 4 4 4 3 3 2 1 1 2. ठीक है, आई हैव टू चूज एटलीस्ट 2 2p कहाँ पे आएगा? ए का 3, ए का 3 में आइदर ए और इट इज गोइंग टू बी बी. देन 3 2 3 and 2, that is d. 3d, 3d is where? 3d, 3d is 4, b का 4, b का 4 is b option. So b option is correct. That's it. और कुछ करना ही. ओ B4 दोनों में ही है. एक सेकंड, एक सेकंड बी नहीं देखते ना, फिर तुम लोग सी देखें. हाँ सी देखना होगा. C 303S
सी का 1, हाँ बी ऑप्शन सही है। Okay, मतलब वैसे भी सही है। I had to A, B और C देखना पड़ा। I should have seen A and then I should have seen C. I should not have seen the B because B is seen in both options. But still, okay, A is not correct, B is correct. आलिया, नबील and निरम, याद है ये सारी चीजें? दिक्कत हो रही है। You guys having difficulty? This is fine. आलिया, tell me, आलिया। नहीं सर ठीक है। ठीक है, इरम। So it's fine. Fine. समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ आ रहा है। नबील, what about you? आ रहा है, ठीक है। Arrange the following orbitals are arranged in the choose the correct option. Decreasing order of energy में choose करना है, so I hope you guys, चलिए ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पे, अगर आपको नहीं है तो अप्लाई कर लीजिएगा बस आप। Energy is defined by n plus L2. So if orbital is having a higher n plus L2, energy is also higher. If for the two orbitals n plus L is same, then we will look at the value of n. Then we will look at the value of n. Okay, first we will look at n plus n. If n plus n value is same, then we will look at the value of n. The orbital which is having higher value of n will be having higher energy. So that's the rule. Please apply it. Answer. Take 1 more minute. Will calculate the energy of these orbitals, है ना? They have 4D. 4D का मतलब 4 plus what is D? SPD. That means it is 2. P equal to 6. And we have 5P. 5P means 5 plus 1. Right, this will be also equal to 6. Then we have 5F. F is 3. So we equal to 8. Then we have 6P. 6 plus 1, that is equal to 7. So highest energy will be, this is for 5F, the highest energy 5F power. 5F is in B and C option. Then we will be having 6P. 6P in both of them is there. Okay, 6P हो गया. And now here if you see the value of n plus n is same, then we look at the values of n. 5P will be having greater energy. 5P कहाँ पे? C option. Option number C will be correct. No, Nabil. ये
तो 5 plus 3 8 है ना, और 5f, this will be having the highest energy. D तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है. S is 0, P is 1. आपने शायद P को 2 ले लिया था, तभी ये गलती की होगी आपने. That you saw 6 plus 2 is equal to 8, then you saw the principal quantum number. You saw 6 is greater, so you did for 6p. But 6p is not, but the right answer will be 5f, then 6p, then 5p, then 4p. Try this. From the value of L, you will calculate the number of values of M. For each value of M, you will get multiple values of M. For each value of M, you will get that many orbitals. Tells you the number of values of M, tells you about the number of orbitals. In each value of M, you can put 2 electrons, right? So using this particular theory, try the answer, try the given. You need to calculate the M, then multiply it by 2. That's it. What two answers? I will give you 1 more minute. Messages I have got, I don't know what the answers. Got your answers. Just waiting for Nabil. Yes, very good, correct. Also, you can use a very simple idea that 3 and L is equal to 1, that means it is going to be the p orbital, right? So, and p can hold how many electrons? 6 electrons. If you want to go to the M pathway, then in that case, you can have M will be equal to -1, 0, and +1. So, there are a total of 3 orbitals, and 3 orbitals we can have 6 electrons. Okay, so whatever path you are going to use, that's valid. Now, try this next one. Which of the following pairs of d orbitals will have electron density along the axis? So d orbitals are divided into axial and non-axial parts. Axial and non-axial. This is also applied in coordination compounds crystal field theory. So if you remember something regarding crystal field theory, in octahedral field, then you may be able to answer this part. The d orbitals that have electron density along the axis. Let's try this.
No error. One more minute, guys. Are you correct? Correct. Very. So the two d orbitals which have electron density along the axis will be the square wala part. This may be square hota hai. dz square and dx square minus y square. These are what? Axial d orbitals. dz square तो आप लोगों को पता है dz square is completely along the axis like this. There is a ring, and then dx square y square is like this in the x and y axis. The rest of the d orbitals are between the axis like this. Okay. So if this axis is x and y, so this orbital will be named dxy. So there are two d orbitals which are axial, and there are three non-axial. Okay. There are three non-axial. Moving on. Try this. Two electrons occupying the same orbitals are distinguished by, that means what is different in the electrons which are in the same orbital. Very good. Spin quantum number. इसको छोड़िए, इसको आएंगे बाद में इसमें. Try this. The number of paper पुराना है ना? हाँ, ये बहुत पुराना. Try this. The number of d electrons in Fe2 positive is not equal to the number of electron in which one of the following. ठीक है? Is not equal to. Is not equal to. Try this. The number of d electrons. ऐसे नहीं होगा आलिया, ऐसे नहीं होगा. You'll have to do each like Fe2 positive आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, and after writing the electronic configuration, ये आपने नहीं आंसर किया ना, previous answer, sorry आ गया, ये हमने पुराने आंसर को देखिए. So Fe2 positive, write the electronic configuration for this, then see the number of d electrons, write the electronic configuration again of Fe, then write the number of d electrons, how many d electrons are there, number of d electrons is equal to 2 3 4 5 जो भी होगा, ठीक है, and then you will get the clear answer. Please try it, please try it.
We have got A option. Take 2 minutes. और सबको निकालने में टाइम लगेगा. When you are writing the electronic configuration of Fe2 plus, please remember that the outermost electron is going to be removed. ठीक है ना? Electron which will be removed is the outermost electron. Write the electronic configuration of Fe and you will understand which is the outermost electron. With 30 more seconds, please. Okay, Nabil. Since I have got all the answers, let us see. First of all, we will write the electronic configuration for Fe. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Okay. Now, when you have to remove the electrons from the Fe, you have to remove the electrons from 4s initially and then 3d. Okay. If you are removing directly from 3d, it will be wrong. So the electronic configuration, if I see the number of d electron in if the electronic configuration of Fe2 plus will be also the same. Everything will be same. It will be just 3d6. आप ये 4s2 निकाल दीजिए. So number of electrons that we are looking at is equal to 6. Now here the d electrons in Fe it is also n is equal to 6. Now we'll write the electronic configuration for any. It will be 1s2, 2s2, 2b6. 10 electrons are done. So number of electron in the number of p electron is equal to 6. So it is still same. Mg 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Right? This is 12. Number of electrons in the p subshell it is equal to what? It is still equal to 6. Now for chlorine 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, how much? 5. Right? So now the number of electron in the p is how much? The p electron is 6 plus 5, that is equal to n is equal to 11. Okay? And that is why it is not equal to the number of electrons in number of d electrons in Fe2 positive. This option will be correct. The D option. Iram, you got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir, वो not equal to मैंने पढ़ा नहीं. So not equal to ही नहीं पढ़ा आपने, हम इसको अंडरलाइन करके रखेंगे. चलिए खैर. Try this. What is the maximum number of orbitals that can be identified with the following quantum numbers?
What one answer? Take 1 more minute. Time is almost done. See, n is equal to 3, n is equal to 1, n is equal to 0. What is the number of maximum number of orbitals? Okay. Orbital तो यहाँ पे they have just constrained ना कि 3 p में आप तो हैं, but you are at n is equal to 0. That means one orbital. Maximum number of orbitals that can be identified with the following quantum numbers. M0 कितना बस एक ही का होगा. You don't have any other orbitals which is will be having m is equal to 0 in 3p. 3p में नहीं होगा. 2p में हो सकता है, 4p में हो सकता है, but 3p में नहीं होगा. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन. Try this.
Got one answer. Take 1 more minute. Check. We have got all the answers. Okay, all the answers are carried by the incorrect statement. All 5D orbitals are different in size when compared to the respective 4D orbitals. If that is true, 5D will be larger in size, right? So this statement is true. All the 5 4D orbitals have similar shapes to the respective 3D. Yeah, because it is D, it is going to be similar. This is true. In an atom, all 5 3D orbitals are equal in energy and free state. That is also true because they are degenerate. The shapes of dx, dy, dz orbitals is similar to each other, and dx square minus y square and dz square are similar to each other. No, dx square minus y square and dz square are not similar to each other. That's why D option will be correct. Okay, the D option is incorrect statement, so the option D is correct. Will you try this? You have got 2 answers. See here. Which one of the following is wrong statement? The total orbital angular momentum of an electron in s orbital is equal to 0. An orbital is designated by 3 quantum numbers, while an electron in an atom is designated by 4 quantum numbers. Okay. The electronic configuration of nitrogen. Now, this is, you can see that it is completely incorrect. Why? Because these are up and this is one is down, which it cannot be true. Like if we are filling the orbitals, then you have to fill the orbitals with the same spin initially, and then the pairing should take place. So this is incorrect. So C option is the correct option because this statement is wrong. Okay, I think all of you answered C. Yes, Era Manalia, both of you answered C. Actually, moving on. बस इस पे एक ट्राई करिए, then we will be doing isoelectronic. Yeah, then we will be doing some numericals after 2 questions. Yeah, okay, fine, Alia.
but ठीक है, no problem. But try to attend the complete classes. ठीक है, you can leave if you want to leave. Kiran, please try this. See, statement one, the value of wave function psi depends on the coordinates of electron in the atom. The probability of finding an electron at a point within an atom is proportional to the orbital wave function. You have to say, given other two statements, you have to try it. Theorem has answered. देखिए थोड़ा सा यहाँ बस nuance है theorem. The first statement is true that psi depends on the x, y, z, and where is the electron located, the coordinates of the electron in an atom. But the probability of finding an electron, it is not proportional to the orbital wave function, that is psi. Okay. The probability of finding electron, which is directly proportional to the psi square. Okay, so this is important. It's proportional to psi square and not psi. So statement one is true. But statement two is false. So option A. ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये सवाल भी आपको कर लीजिएगा. Be2 plus is isoelectronic with which of the following ions? Be2 positive, beryllium 2 positive का number of electrons कितना हो, and which of the following will have a similar number of electrons? Hydrogen, helium, lithium, beryllium. ठीक है, so if you remove 2 electrons, it will be how much? 2 electrons will be remaining. Here you have 0 electrons, lithium 1, here you have 2 electrons, sodium तो 11 होता है, 10 हो जाएगा, यहाँ पे also be 10. So lithium 2, lithium possible be the correct answer. So same number of electrons, isoelectronic, same number of electrons. Please copy कर लीजिए इसमें. Next, we have a particular question. Very basic. It is, I think it is there in NCERT as well of class 11. So basic thing that we have to just know is energy. It is equal to h c by lambda, or it is equal to h mu, and mu it is equal to c upon lambda. So these are the relationship that you have to remember. Now the value of, did they give the value of h? No, they have not given the value of h. So c की value आपको तो पता होनी चाहिए. C is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. That is the speed of light. The value of h
H is the Planck's constant, which is equal to 6.626 होता है, but 6.63 ले लीजिए आप, 6.6 भी आप लिख सकते हैं. 6.63 into 10 to the power minus 34. That is the value of Planck's constant, and the unit of Planck constant is joule seconds. ठीक है, joule seconds याद रखिए, joule seconds है ना. मेरे वैसे मीटर मीटर का मुझे कहाँ चाहिए. Please try this. Write the formulas and everything. A particular station of All India Radio immediately broadcasts a frequency of 1368 kilohertz. The wavelength of the electromagnetic radiation emitted by transmitter is. So they have given you the frequency. By the way, what is 1 hertz? 1 hertz, what is 1 hertz? One hertz is equal to 1 second inverse. ठीक है, frequency की unit जो होती है plus time inverse. So use this value. I mean, you just need to remove किलो को 1000 लिखिएगा. ठीक है, चलिए कीजिए 2 मिनट दे रहे हैं आप लोग, कीजिए आप लोग ये कर सकते हैं ये सवाल कम से कम. Over. चलिए, let us see. Basically यहाँ जो खेल that is mostly going to be the powers of 10 के ऊपर खेल होगा. ठीक है. Also I think this question is not very worth it because the options are very bad here. Okay, fine. If you look at this option, I mean, इस तरह के सवाल को छोड़ देना ही बेहतर होता है. I mean, if you have time, then do these type of questions. Otherwise, leave it because 219.3, 219.2, there is no scope of approximations here. वक्त है तो कीजिए, otherwise आगे बढ़िए. ठीक है. So let us see how to do this question. Although it is quite easy, है ना, कुछ खास इसमें तो है नहीं. What do we have? We have the frequency, and we have to tell the wavelength. So C upon lambda. So lambda will be equal to C upon the frequency. C is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. And frequency it is equal to how much? 1368 into 1000. Right? So this will be equal to 3 upon 1368 into 10 to the power 3 and here 8, 5. Right? So 3 plus
8 से 14 15 16 17 18 18 हाँ ठीक है, this can be eliminated ना, this can be divided. So how many times we will have to do this? 3 4s are, and then we will have to do this 16, so 5s are, then we have to do this 3 6s are. So 1 upon 456. Now you will divide this value, then you will get the answer. जब आप आंसर निकालेंगे ना तो आपका आंसर निकलेगा 219.2. उसका अगर आपने छोड़ दिया तो फिर 219.2 आप मतलब टिक करके आ जाएंगे, बट 219.29 आएगा आंसर. ठीक है, तो यू विल हैव टू अप्रोक्सीमेट दिस टू 219.3. सो वट एवर इज इन द आंसर्स, जितने डेसिमल पॉइंट आंसर में दिए हुए हैं उससे एक ज्यादा आप निकालने की कोशिश कीजिए, देन अप्रोक्सीमेटेड, so that you will get the correct answer. But again, my suggestion will be that if you have this type of options, leave that question. ठीक है, बिकॉज अप्रोक्सीमेशन का यहाँ पे स्कोप ही नहीं है. अगर सिर्फ और सिर्फ लेट सपोज ना, मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको ना बस इतना ही रहता, आई मीन लेट सपोज दिस ऑप्शन वाज नॉट देयर. ठीक है, ये ऑप्शन नहीं रहता, इसके अलावा ऐसे रहता 2.192 रहता, ये भी रह सकता था 21.92 21.93 तो 21.92 सारे ऑप्शन तो है. ठीक है, नाउ लेट अस सी. अगर इस तरह का ऑप्शन रहता ना तो फिर हम लोग को पूरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता. आई वुड हैव अज्यूम्ड दिस टू बी 1/500 सीधा 1/500 इंटू 10⁵. जब ये क्या हो जाता 1/5 इंटू 10⁵ अपॉन 10⁵2. दिस विल बी 1/5 क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 0.2 इंटू 10⁵. दिस विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 200 के करीब आता है. तो व्हाट इज नियरेस्ट टू 200 हियर? ऑप्शन बी विल बी नियरेस्ट टू 200 only if the options. अब see how different the question becomes. The amount of time you're going to put on a question, it depends on the options also. If this option was 2.192, then I would have just ignored everything, because अब multiples of 10 में तो approximation में गलती कभी होगी नहीं, है ना. The real answer was 219.29. If I take 456, हमने 500 ले लिया, मतलब 50 बढ़ा दिया, उसमें भी फर्क कितना आ रहा है 19.29 का. ठीक है, so it really depends on the options here. चलिए आगे चलते हैं. Try this next one. Calculate the energy in joule corresponding to light of wavelength 45 nanometer. Here the Planck constant has been given. Speed of light has also been given. E, it is equal to h c upon lambda. Apply this. Apply this particular formula, you will get the answer. This would be easy because if you just have the powers of 10 right, अगर आपने powers of 10 को सही सही कर लिया, then you will get the answer.
Yeah, got one answer. Okay, Ram. You have 1 more minute. सर Yeah, it's me. सर कितने क्वेश्चंस आते हैं एक चैप्टर से? एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं? That really depends on question paper. इस बार इस चैप्टर से शायद 2 या 3 सवाल रहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से, ठीक है। एंड सिमिलरली जैसे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से अल्टरनेट ईयर्स में आपको सवाल मिलेंगे। समटाइम्स देयर विल बी वन क्वेश्चन, समटाइम्स इट विल बी नॉट। आल्सो फॉर सॉल्यूशन एक और इसमें दिक्कत ये है, इफ दे आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग कंसंट्रेशन टर्म्स, तो कंसंट्रेशन टर्म्स को या तो आप सम बेसिक कांसेप्ट्स इन केमिस्ट्री में रख सकते हैं, और यू कैन कीप इट इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस वजह से शायद दिक्कत होती है। अदरवाइज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से ऑल्टरनेट ईयर्स में सवाल आते हैं, मतलब हर साल नहीं आता, लेकिन आसान सवाल होता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का। तो आप अगर बोर्ड्स के नोट भी देखे जाएंगे तो चल जाएगा। सो दैट इज व्हाई यू कैन सी कि हम 2014 तक पहुंच गए हैं, 2021 से 2014, 2023, 18, 22, 14, 15, तो छोड़ दीजिए 16, 19, ठीक है। सो ऑलमोस्ट हर साल आपको इससे 1 से 2 सवाल मिलेगा। एक क्वांटम नंबर पे बेस्ड रहता है और एक सवाल इस तरह के कैलकुलेशंस पे बेस्ड रहता है, ठीक है। तो एच सी अपॉन लैम्डा, you go to this site, examsite.net, ठीक है। there you will get all the averages and everything, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए examsite.net, so you will get the averages approximately एक चैप्टर से कितना आता है। I mean all the PYQs I have taken from that site itself, ठीक है। सारे PYQs की वहीं से। so E is equal to hc upon lambda, h is equal to what, 6.63 into 10 to the power minus 34 into c is 3 into 10 to the power 8 divided by थोड़ा सा गलती कर दिया हमने, लैम्डा दिया ना, हाँ लैम्डा दिया, अच्छा ठीक है, 45 into 10 to the power minus 9, बस तो गया, ठीक है। हाँ, तो 6.63 डिवाइड बाई 45 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 9 ऊपर भेज देंगे तो 9 plus 8 it will be equal to 17 minus 34 plus 17, right? So 10 to the power it will be minus 34 plus 17 कितना हो जाएगा, minus 17 हो जाएगा ना, minus 17, and here we have 6.63 upon 45। 6.63 में अगर हम ऐसा करते हैं, इसको 66 कर देते हैं, 66.3 अपॉन 45, तो ये आपका 17 से माइनस 18 ले जाना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली 45 इफ आई डिवाइड दिस इट विल बी नॉट वेरी एक्यूरेट, बट 45 है ना, हाँ 45, अच्छा ओ माय बैड, एक चीज आपको मिस हो गया, इनटू 3, सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 19 यहाँ पे होगा ना, जी हाँ 19 होगा, तो 190 के करीब। तो यू कैन सी 10 to the power minus 18 आ रहा है, ठीक है। इफ आई वांट द आंसर टू बी इन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म, कि आपके पास एक नंबर हो 0 से लेकर 1 से लेकर 9 तक, एंड देन यू हैव अ डेसिमल पॉइंट एंड समथिंग, will be 10 to the power minus 18, so D option is correct. You will not have to do this by the way। अगर आप इसको अगर 18 या 19 मान के चल रहे ना, 19 अपॉन 45, ठीक है, तो 190 अपॉन 45 कीजिएगा, 190 अपॉन 45 कितना हो जाएगा, 45 45 90, अगेन 45 फोर है ना, कितना हो जाएगा 180 10, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर सही आएगा आपका। चलिए मूविंग ऑन, ट्राई दिस। अच्छा इसको अभी, अब जैसे इसको ट्राई कीजिए, ये सिर्फ वही वापस से कैलकुलेशंस वाले है ना, ट्राई दिस, दिस कंसेप्चुअल, इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कंसेप्चुअल सवाल है।
See, energies E1, E2 of two radiations are 25 electron volt and 50 electron volt. So this is energy and this is energy, right? E1, E2. Respectively, the relation between their wavelengths lambda 1 and lambda 2. तो देखिए एनर्जी के लिए क्या रिलेशनशिप होता है? एनर्जी इट इज इक्वल टू hc upon lambda, so inversely proportional to lambda, है ना? So if I look at E1 and E2, then I will say that E2 it is equal to twice of E1, right? अब इसका उल्टा हो जाएगा किसके लिए? और लैम्डा, लैम्डा में क्या होगा? E2 की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? लैम्डा 1, और E1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा? लैम्डा 2, बिकॉज़ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है? लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2, दैट इज द बी ऑप्शन, ठीक? Moving on. Now we have different energies based on this equation. चलिए इसको छोड़िए, आपको ना अब हम बोर का जो मॉडल है उसके लिए एक ट्रिक बता देते हैं, उससे ऑलमोस्ट सारे आपके पास सवाल हो जाएंगे, ठीक है? तो फॉर बोर ना दे विल आस्क यू बेसिकली थ्री थिंग्स. दे विल आस्क यू अबाउट द एनर्जी, और दे विल आस्क यू अबाउट द रेडियस, और दे विल आस्क यू अबाउट द वेलोसिटी, ठीक है? The energy of an orbital, the radius of the orbital, or the velocity of the electron for a particular orbital. Velocity सबसे कम बार, energy radius सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है. आसान से एक ट्रिक है, इसको याद रख लीजिएगा. एरविन कर लीजिए. एरविन, IN is nothing, IN just for rhyming. एरविन जन 221. एरविन जन 2211, ठीक है? एरविन जन 2211. You remember this, then you will be able to solve the problems of radius and everything. अब बस आपको याद क्या रखना पड़ेगा? आपको याद रखना पड़ेगा द वैल्यूज, कांस्टेंट्स होगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा. जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी की अगर हम बात करें, एनर्जी एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट इज इक्वल टू, देयर विल बी सम कांस्टेंट ई नॉट, सम कांस्टेंट ई नॉट. अब यहाँ पे देखिए ई के नीचे क्या आया है? जेड आया. उसके बाद क्या है? एन आया, तो जेड अपॉन एन. पावर क्या है? जेड के ऊपर, एन के ऊपर. मेक सेंस कैसे करना है ये इस ऑफिशियल में? बात समझ में आई कैसे करना है? सिमिलरली अब ई नॉट क्या होगा उसको देखेंगे. लेट्स सपोज रेडियस है, रेडियस के लिए एक वैल्यू आएगा आर नॉट. रेडियस के नीचे क्या है? एन है. फिर उसके बाद क्या है? जेड है, डिवाइड बाई जेड. व्हाट इज द पावर ऑफ एन? इट इज 2. व्हाट इज द पावर ऑफ जेड? इट इज इक्वल टू 1, ठीक? और वेलोसिटी, देयर विल बी सम वेलोसिटी वी नॉट, उसका वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा. इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द यूनिट दैट वी आर टेकिंग. फॉर एग्जांपल एनर्जी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले ले, किलो जूल पर मोल ले ले, उस पर डिपेंड करेगा. बट यू दिस इज मोर इंपॉर्टेंट. आपको सवाल के जो जवाब मिलेंगे ना वो यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है? सिमिलरली फॉर वेलोसिटी वी नॉट, एंड वी के नीचे, वी के बाद क्या है? यू हैव जेड, वी के नीचे जेड है, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव एन, एन लिख दिया आपने, एंड इसके पावर्स वही रहेगा, ठीक है? पावर्स, पावर इन नॉट गोइंग टू. तो फॉर एग्जांपल अगर हम रेडियस की बात करें, तो इन द केस ऑफ रेडियस आर नॉट is equal to 0.529. If you are taking 0.529, then the answer will be in angstroms, ठीक है? इसको याद रखना. वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए क्या करना है आपको? वेलोसिटी के लिए यू हैव टू रिमेंबर द v नॉट इट इज इक्वल टू 2.188 कर लीजिए, या फिर 2.2 कर लीजिए, 2.188, एंड दिस विल बी इन मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है? एंड इन द केस ऑफ एनर्जी यू हैव टू डू 13.6. एनर्जी केस में ई नॉट क्या होगा? ई नॉट की वैल्यू इट विल बी 13.6, एंड यू विल गेट दिस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. प्लीज कॉपी दिस डाउन. इसके बाद फिर कुछ सवाल देख लेंगे इनको. Iram and Nabil, you understood how to use this part? This one please tell me. समझ में आया कैसे यूज करना है? Yes. ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा. बाय द वे जेड वेड आप लोगों ने पूछा नहीं है, बता दे रहे. यहाँ पे जेड इट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर. अगर आप हाइड्रोजन का यूज करें तो 1 हो जाएगा,
हीलियम पे यूज करें तो 2 हो जाएगा एंड सो ऑन. Z is the atomic number and n is the orbit number. ठीक है, ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट कहाँ पे याद कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन दैट. I hope you have written this down. अब जैसे देखिए सीधा सवाल है. If the radius of Bohr's second orbit of the helium ion is 105.8 picometers, what is the radius of the third Bohr orbit of Li2 plus ion? ठीक है, they have given the Bohr orbit of helium positive ion इस इतना, इससे आपको क्या निकल जाएगा, इससे आपको निकलेगा पिकोमीटर्स में इन्होंने दिया हुआ है. आप एक काम कीजिए, ठीक है, आपको एंगस्ट्रॉम का तो पता है ना, एंगस्ट्रॉम से निकाल लीजिए सीधा लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए. इससे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर नॉट बाय द वे. इससे आर नॉट जो कांस्टेंट है ना उसका वैल्यू मिल जाएगा. बट इग्नोर दैट, इफ यू नो हाउ टू, यू रिमेंबर दिस पार्ट दैट आर नॉट जो होगा इसके लिए इट विल बी इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम. तो एंगस्ट्रॉम में निकाल के पिकोमीटर में चेंज कर हैव द ऑप्शंस हियर. ठीक है, टेक 2 मिनट्स फॉर दिस. Guys, minutes are over. So radius of the third or Bohr orbit of Li2 plus. Okay. For Li2 plus hydrogen, helium, lithium, Z will be equal to how much? Z will be equal to 3. And third orbit, so N is also equal to 3. And where are we? We are at the radius, right? For radius, what do we have? N square upon Z. Okay. So N square N is equal to what? N square will be 3 into 3. That is what?
3, so this will be only 3. अब यहाँ पे आपके पास जो रेडियस हो जाएगा, this will be equal to 0.529 into 3. 0.529 कितना हो जाएगा? This will be in angstrom by the way. This will be equal to 1.5 के करीब कुछ आएगा, नंबर्स आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। 1.5 के करीब कुछ आएगा, दिस विल बी इन एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम से आपको कहाँ जाना है? पिकोमीटर में जाना है। सो डू यू नो व्हाट इज पिकोमीटर? थ्योरम? एनी आइडिया व्हाट इज 10 to पिकोमीटर? the power minus 3. 10 to the power minus 3 मिली होती है। देखिए, आपको ऐसे स्टार्ट करना है। 6 minus 6. 6 माइक्रो होता है वो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ठीक है। तो मिली में 10 to the power minus 3, माइक्रो में 10 to the power minus 6, 3 बढ़ाते जाइए। नैनो में 10 to the power minus 9, पिको में 10 to the power minus 12, 12. ठीक है। So this will be equal to 1.5 into 10 to the power minus 10 because it is angstrom. अगर इसी को minus 12 कर देंगे तो it will be equal to what? 1, कितना जीरो? 1 और 2 जीरो, राइट। 1.5 नहीं, 2 बढ़ाना ना, नहीं तो 150 हो जाएगा। 150 into 10 to the power minus 12, तो 150 के करीब कौन सा आंसर है? फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से करना। कल के टेस्ट के लिए ना पीवाईक्यूज कर लीजिएगा, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन तो वैसे इससे कुछ सवाल तो रहेंगे ऑब्वियसली। मतलब अब ये जरूरी है कि अगर आपको जो पहला टेस्ट होने वाला है इसमें भी हैव डन ओनली व्हाट चैप्टर्स? मोल कंसेप्ट, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, 4 चैप्टर किया हमने, एंड यू विल बी हैविंग 50 क्वेश्चंस। तो हर से लगभग 12 से 13 सवाल तो रहेंगे फ्रॉम ईच चैप्टर्स। यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, बट पीवाईक्यूज कर लीजिएगा, उतना काफी होगा, है ना। इसी फॉर्मूले के आसपास घूमता रहेगा, ठीक है। You will be also asked to calculate the difference in energy. अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में जंप करेगा, then what will be the energy required, ठीक है। तो थर्ड से फिफ्थ में जाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, that will be the difference of the energy between थर्ड और फिफ्थ का एनर्जी निकालिए, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, that will be the energy required। तो इस तरह के सवाल कुछ रहेंगे। पीवाईक्यूज कीजिएगा तो उसमें आपको सवाल मिलते रहेंगे, बट कीप इन माइंड दिस फॉर्मूलास, ठीक है। और इससे ज्यादा आपको बहुत कुछ और फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इवन फॉर द मैटर ऑफ व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द आयनाइजेशन। आयनाइजेशन से भी आप कहाँ जाते हैं? आयनाइजेशन से आप जाते हैं फर्स्ट ऑर्बिट से लेके इंफिनिटी में। पहला को आपने एन का वैल्यू को 1 रखना है, और लास्ट मतलब जो एंड है आपका फाइनल स्टेट है, वहां पे एन की वैल्यू को क्या रखेंगे? इंफिनिटी रखेंगे। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी विल बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो बस डिफरेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा? अच्छा बाय द वे, एक चीज बस हम आपको यहाँ पे इसको ना माइनस में लिखिएगा, विल बी अ माइनस साइन, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी केस में देयर विल बी अ माइनस साइन बिकॉज दिस अट्रैक्शन होता है ना, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, ठीक है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, माइनस साइन आएगा। कूलम्स लॉ अगर आपने पढ़ा ना, Q1 Q2, Q1 होता है पॉजिटिव और Q2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। प्लस माइनस, माइनस साइन शोज दी अट्रैक्शन। बस यहाँ पे